Okay, now I would like to discuss definite integral. So definite integral, so there are two methods we are studying. One is definite integral as the limit of a sum, but this is not in the syllabus this year. It is not in syllabus. So we are not going to discuss that. And अभी तक हमने जो पढ़ाई किया था indefinite integral. So definite integral का मतलब क्या है? It is nothing but it is the area bounded by the curve. So your simple example बोलेंगे तो जैसे suppose this is your y axis and x axis. This is your x axis, this is your y axis, and your suppose your graph. This is your graph. This is your function y is equal to f of x. Then आपको जो f of x का इंटीग्रल निकालना है, सो इसको बोलते हैं इंटीग्रल a to b. सो अभी तक हमने जो किया था उधर कोई वैल्यूज वगैरह कुछ नहीं था. सो इधर अभी a to b, ये को बोलते हैं, a is known as the lower limit, b is called upper limit, b is called upper limit. So integral read, this is read as integral a to b f of x dx, integral a to b f of x dx, integral a to b f of x dx. इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग इतना ही है. सो इधर होगा आपका ex is equal to ये, मान लीजिए दिस इज योर पॉइंट ex is equal to b. देन फ्रॉम a to b आपको ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना, मतलब जो a to b x is equal to a, x is equal to b and that function. सो इसका जो नीचे इतना एरिया में जो फंक्शन का इतना फंक्शन का एरिया, इधर area under the curve from x is equal to a to x is equal to b. That is the meaning of definite integral. So integral a to b f of x dx is nothing but the area bounded by the curve. The area, this area, the shaded portion, this area bounded by the curve, this area bounded by the curve. Area bounded by the curve, then the ordinates x is equal to a, that means this line, x is equal to b, this line, and the x-axis. ये चार चीज, x is equal to a, this vertical line, x is equal to b, this vertical line, then the curve and the x-axis. उसके जो बीच में जो area, that is known as integral a to b f of x dx. Clear? Okay. So that's known as definite integral. So definite integral is nothing but it is the area bounded by that curve. So from where to where? A to B. So that is why x is equal to A, x is equal to B. These two vertical lines and that curve and the x-axis. उसके बीच में जो area है, that is the geometrical meaning of integral A to B f of x dx. Okay. And for finding that, there was one method which is known as definite integral as the limit of a sum, but that is not in the syllabus this year. So we will go to that another method that is known as fundamental theorem. Okay, fundamental theorem. So the first fundamental theorem says like this. It's very simple. It says f is a function in the closed interval ab, define the closed interval ab. That area of the function, a is the area of the function, then a dash x is equal to f of x.
मैंने आपको बोला था, सो एरिया ए इज एरिया, सो इंटीग्रल एरिया है, इंटीग्रल इज द एरिया, उसका मतलब यही है, जैसे इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोला था, दैट इज नथिंग बट द एरिया। उसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ a of x, that is the f of x. Derivative, that is derivative of some function is f of x, then we can say that integration as a reverse process, integral of f of x is equal to a of x. Clear? So integral a to b f of x dx is nothing but, I told you that geometrical meaning is it is area under the curve, that is area a of x. So iska meaning kya hai, derivative of a of x is equal to f of x. In other words, we can say a dash x is equal to a derivative of a of x मतलब a dash x is equal to f of x. तो वो ठीक है. सो उससे सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यही है, डेरिवेटिव निकालने का सबसे the formula, that is the most important formula. This is the most important formula. This one is the most important formula. It is like this: integral of f of x is equal to, so I will tell you have to find the antiderivative. So I will explain it with example, then you will understand. Suppose आपको चाहिए integral of x square from 2 to 3 dx. तो x square का इंटीग्रल आपको पता है x cube by 3. So that is your capital F of x. Then limit दे देना 2 to 3. Now it is nothing but f of b, that function का upper limit का वैल्यू सबसे पहले upper limit दे देना. That means, so this is सबसे पहले upper limit. So 3 cube divided by 3 minus, then lower limit दे देना, 2 दे देना, 2x को 2 cube divided by 3. So that is, so a3 cube 27 divided by 3 minus 8 divided by 3, which is equal to 19 divided by 3. That's it. So that's a very simple thing. Just find the integral, then value substitute करना, upper limit minus lower limit. That is this known as second fundamental theorem of integral calculus. That is the most important formula that we are going to use. First, just find the integral, then upper limit minus lower limit. That's all. Okay, एक सिंपल प्रॉब्लम करेंगे. देखो, इंटीग्रल -1 to 1 x plus 1 dx. So as per that fundamental theorem, just integrate first. Integral x is x square by 2 plus integral 1 is x. Then it is -1 to 1. तो उसका वैल्यू निकालना कैसे, सबसे पहले अपर लिमिट दे देना. सो 1 दे दो, 1 स्क्वायर 1 by 2 plus 1 माइनस द लोअर लिमिट दे देना, -1 का स्क्वायर 1 by 2 plus x is equal to -1. So 1 by 2 plus 1, so 1 by 2 plus 1 minus 1 by 2 plus 1. 1 by 2 minus 1 by 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 plus 1 2. So simple. Another question, integral 2 to 3 1 by x in 1 by x dx. So ये करने के लिए सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, बाकी सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर. इट इज 1 by x इंटीग्रल इज log x.
इधर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन उसमें से कैंसिल हो जाए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते टाइम दोनों जगह कांस्टेंट आएगा, कैंसिल हो जाएगा. सो देयर इज नो नीड टू गिव कांस्टेंट इन डेफिनेट इंटीग्रल. सो 2 to 3 अपर लिमिट दे दो log 3 माइनस लोअर लिमिट दे दो log 2, log 3 minus log 2, and log a minus log b can be written as log a by b, so log 3 by 2. Okay, so another question I would like to do, integral, just to make you familiar with that concept or that fundamental theorem. 0 to pi by 4 tan x dx, that is integral 0 to pi by 4 tan x can be written as integral tan x, sorry, integral tan x is आपको अभी पता है value, integral tan x is log secant x, so log secant x, constant of integration देने का कोई जरूरत नहीं, 0 to pi by 4. Now this is, now upper limit दे देना log secant pi by 4 minus lower limit log secant 0, that is log secant pi by 4, secant pi by 4 is root 2 minus log secant 0 is, what is the value of secant 0? Secant 0 is 1 by cos 0, which is 1 by 1, which is 1. So log 1. But log 1 is 0, that is log root 2 minus 0. Log 1 is, because logarithm of 1 is equal to 0. So log root 2. हो गया answer, log root 2. So if you want, you can simplify like this, log root 2 is 2 to the power 1 by 2. So that can be written as 1 by 2 power times logarithm of the base. So simple thing, just integrate, then upper limit minus lower limit, that's all. So abhi any type of function आएगा, whatever the function, you have to integrate it, then give upper limit minus lower limit, that's all. One more question, like integral 1 to root 3 dx by 1 plus x square dx. Integral 1 by 1 plus x square is tan inverse x. Then 1 to root 3. So upper limit, tan inverse root 3 minus tan inverse 1. Tan inverse root 3, tan pi by 3. So inverse trigonometry function, you have to find that value. Pi by 3 minus tan inverse 1, which is pi by 4. So which is 4 pi minus 3, that is pi by 12. That's the value. Okay. So now there are some properties. There are some properties of definite integral. That's a important thing. Like, so नहीं है तो definite integral आया तो सबसे पहले हमें integrate करना पड़ते हैं. So integrate करने के बाद upper limit minus lower limit देना है. So that is the second method, that is known as the fundamental theorem. But there are some special properties for definite integral. Then वो property use करके भी हमें problem करना है. That properties that I'm going to discuss now. This is the most important topic of definite integral. Properties of definite integral. देखो, here some 8 properties are defined. So first property देखो, integral a to b f of x dx. It is same as integral a to b f of t dt. That means you can change the, like, for example,
integral 1 to 2 x dx or integral 1 to 2 t dt. Only thing is the variable is changed. So it is x square by 2, we know that. So 1 to 2. This is t square by 2, then 1 to 2. Then आप upper limit दे देंगे तो it is 4 by 2 minus 1 by 2. Here है तो भी t square 2 दे देंगे तो 4 by 2 minus 1 by 2. So it is same only. That means you can change the variable. Limit we are not changing. It is a to b, f of x dx or f of t dt. It will be same. You can change the variable. Integral a to b f of x dx is equal to integral a to b f of t dt. That is the first property. So all the properties, the proof is given in the textbook. You can go through that. But I just want to explain the properties. We need to know what the property says. Now, second property देखो, integral a to b f of x dx, that is same as minus integral b to a f of x dx. That means आप जो upper limit lower limit change करेंगे तो value negative हो जाएगा. So here आप देख सकते हैं, जैसे here the first one ये देखो, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 4 by 2 2 minus 1 by 2. So आपको मिलेगा 2 into 2 4 minus 1 by 2, that is 3 by 2. अब अभी इंटीग्रल 2 to 1 देखो, 1 to 2 the 2 to 1 x dx देखो. So it is x square by 2 2 to 1. So first 1 there, an upper limit. So 1 square 1 by 2 minus 4 by 2. So आपको मिलेगा minus 3 by 2. So you can see that here it was plus 3 by 2. Here it was minus 3 by 2. So क्या किया, 1 to 2 the 2 to 1 कर दिया. आपने जो lower limit upper limit interchange कर दिया. That is the second property says, जब lower limit and upper limit interchange करेगा तब उसका value एक दूसरे का मीन्स साइन चेंज हो जाएगा. प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. सो इन पर्टिकुलर अपर लिमिट और लोअर लिमिट बोथ आर सेम है तो सो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना पक्का. देखो जैसे x को x इंटीग्रल 1 to 1 x dx, सो क्या जाएगा x स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट है लोअर लिमिट 1, सो इट इज 1 by 2 minus 1 by 2. तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. So in particular, so it is very obvious, in particular upper limit and lower limit are same है तो integral value is 0, because इसका मतलब क्या है, area under the curve from x is equal to a to x is equal to a. That means कोई area उधर नहीं है ना, that is why its value is 0. नहीं है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 by 2 इधर फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे तो 1 by 2 minus 1 by 2 it is 0. So the second property main thing is, if you interchange that lower limit and upper limit, the value will become, sign will change. Plus है तो minus हो जाएगा, minus है तो plus हो जाएगा. That is what you need to understand. Then, so first and second property discuss. Now third property देखो, integral a to b f of x dx. That means, so simple आपको बताने, simple explain करेंगे. So आपका एक curve. So this is a, this is b. So a to b f of x dx मतलब, so मान लीजिए c एक पॉइंट है इधर आपका. So a to c इंटीग्रेट किया, that means उतना एरिया निकाल दिया. Then c to b एरिया निकाल दिया. वो दोनों एरिया ऐड करेंगे तो आपको पूरा एरिया मिल जाएगा. That is what this property says. a to b इंटीग्रेट करना है तो a to c करके then c to b कर सकते हैं. जैसे a to b फ्रॉम a से लेके b तक कर्व का अंडर एरिया चाहिए तो
ए से लेके सी तक एरिया निकाला, देन प्लस सी से लेके बी तक एरिया निकाला. बट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, ऐसे कुछ रूल नहीं है कि वो सी उसके बीच में आना चाहिए करके. सी कैन बी एनीवेयर. मान लीजिए दिस इज योर कर्व, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी. सो इन दिस केस आप ए टू सी करेंगे तो आपको पूरा इतना एरिया मिल जाएगा. ए टू सी करेंगे तो देन सी टू बी करना मतलब, तो देखो इंटीग्रल ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और पूरा का पूरा एरिया मिला, प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स मतलब, so that is nothing but minus of b2c f of x dx. c2b is b2c minus of b2c. so क्या होगा, इतना एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहे. c2b मतलब माइनस ऑफ b2c. सेकंड प्रॉपर्टी में हमने बताया था जो लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा. सो सी राइट साइड में है तो ए टू सी करेंगे तो अप टू ए टू सी पूरा एरिया मिल जाएगा. देन सी टू बी मतलब बी टू सी एरिया सब्ट्रैक्ट करें तभी आपको ए टू बी इंटीग्रल मिल जाएगा. दैट मीन्स इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इट इज सेम as इंटीग्रल ए टू सी. ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सी कैन बी एनी नंबर. ऐसे कुछ नहीं ए एंड बी के बीच में आना है करके बिल्कुल कुछ भी नहीं है. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी देखो, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉपर्टी सेज. आप x के जगह in place of x you can write upper limit plus lower limit माइनस x. ऐसे लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा. x के जगह अब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इधर a प्लस b, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी वैल्यूज कोई चेंज नहीं होगा. दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड बहुत बार हम यूज करते हो प्रॉपर्टी. मीन्स इतना समझ लो, x के जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x लिखेंगे तो भी, सो x के जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x लिखेंगे तो भी उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. सो इन पर्टिकुलर उसका जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नीचे बोला 0 to a, तो x के जगह 0 प्लस a माइनस x, दैट मीन्स a माइनस x. सो 0 to a f of x dx है तो x के जगह a माइनस x लिखेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा. इट इज एक्चुअली जो P3 का स्पेशल केस है. P3 में लोअर लिमिट a अपर लिमिट b था, इधर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a. That is why 0 plus a minus x, that is a minus x. ठीक है. So you can go through the proof if you want. So that's a fifth to 5 property हो गया. So just to understand the meaning, first property says आप variable x dx और t dt variable आप change कर सकते, no problem. Second property इधर says आप जब upper limit lower limit interchange करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. देन ए टू बी को आप स्प्लिट कर सकते हैं, सम ए टू सी प्लस सी टू बी. दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी. देन प्रॉपर्टी बोला x के जगह आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x लिख सकते हैं, द वैल्यू विल नॉट चेंज. नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, 0 to 2a.
इसको आप 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम करने के टाइम आपको और समझ में आएगा वो, जैसे 0 to पाई। सो इसको कभी कभी आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं 0 to 2 इंटू पाई बाई 2। सो इसको आप ऐसे लिख सकते करके बोल रहे 2 इंटू 0 to, so 2 into 9, it is, you can written it as 0 to a, that is 0 to pi by 2 f of x dx plus integral 0 to pi by 2 f of 2a minus x. So that means pi minus x dx. So that is the fifth P5 property says. The property says 0 to 2a को वैसे समझ लो, 0 to 2a को 0 to a f of x plus 0 to a f of 2a minus x ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। उसका सब प्रॉपर्टी है सिक्स्थ वन, ये f of 2a minus x का वैल्यू f of x आएंगे तो क्या होगा, 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of x dx आएगा, दैट इज 2 into 0 to a f of x dx आएगा। एंड f of 2a minus x का वैल्यू माइनस ऑफ f of x आए तो इधर 0 to a f of x dx minus 0 to f of x dx हो जाएगा, that is why the value will become 0. P6 is a sub property of P5. And last property, that is another important property, इंटीग्रल माइनस ए टू है, जैसे माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस 3 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स आया है तो इवन फंक्शन है तो वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओड फंक्शन है तो वैल्यू हो जाएगा 0। तो उसका लॉजिक इतना ही है, इवन फंक्शन मतलब आप एफ ऑफ माइनस एक्स के जगह माइनस एक्स देंगे तो आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप एक्स के जगह माइनस एक्स दे दिया, माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर एक्स प्लस, सो इट इज एक्स स्क्वायर। सो जब एक्स के जगह आप माइनस एक्स दे दिया आपको एफ ऑफ एक्स ही मिला, कोई फंक्शन कोई चेंज नहीं हो गया। सो वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन बोल सकते, इवन फंक्शन। दैट मीन्स एक्स के जगह माइनस एक्स दे देंगे तो फंक्शन को कोई चेंज नहीं है तो दैट इज इवन फंक्शन। सो ऐसे है तो इट इज 2 टाइम्स। सो इवन फंक्शन का स्पेशलिटी क्या है, इवन फंक्शन हमेशा सिमेट्रिक रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू इवन फंक्शन ऑलवेज सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सो तो मान लीजिए आपको इधर -3 to 3 सिमेट्री के तो एरिया निकालना है, तो ये इतना एरिया आपको चाहिए, उतना एरिया आपको चाहिए, तो अब 0 to 3 एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करो। सो दैट इज वाई इवन फंक्शन है तो 0 to a करके 2 से मल्टीप्लाई करना, -a to a है तो, क्योंकि इवन फंक्शन का स्पेशलिटी ऐसे है कि even function is always symmetric with respect to the y-axis. So y-axis symmetric है तो y-axis लेफ्ट साइड में भी सेम एरिया आएगा, राइट साइड में भी सेम एरिया आएगा, इसलिए 0 to 3 कितना है एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स ऑल।
सो इवन फंक्शन है करके कैसे चेक करेंगे? सो एक्स के जगह माइनस सब्स्टिट्यूट करके देख लेना। सो माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेम फंक्शन मिलेंगे, तो इट इज इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स दे दिया, माइनस एक्स द होल स्क्वायर, आपको एक्स स्क्वायर ही मिला, सो इट इज इवन फंक्शन। अभी ऑड फंक्शन मतलब, ऑड फंक्शन मतलब आप x के जगह माइनस एक्स दे देंगे तो आपको ओरिजिनल फंक्शन का माइनस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x के जगह माइनस एक्स दे दो, एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स का क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, सो माइनस एक्स क्यूब इज योर ओरिजिनल फंक्शन। आपको नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन मिला, सो दैट मीन्स एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का स्पेशलिटी क्या है? इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक with respect to origin. I will show you the graph above. That means x cube ऐसे ग्राफ आएगा, x cube का ग्राफ ऐसे, origin जैसे दिस इज y is equal to x cube. So आप इधर आपको -2 करना है, से दिस इज -2 तो आपको एरिया निकालना है और -2 इंटीग्रेट करना है। सो क्या होगा, आपको ऐसे मिलेगा। सो जब भी एक्स एक्सिस के नीचे आएगा उसका इंटीग्रल का वैल्यू नेगेटिव आएगा, एक्स एक्सिस ऊपर जाएगा इंटीग्रल का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। सो सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, तो जितना पोर्शन एक्स एक्सिस से ऊपर है उतना पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे आएगा। सो मान लीजिए इसका इतना एरिया प्लस ए है तो इतना एरिया हो जाएगा माइनस ए। सो एरिया पूछेंगे तो एरिया दोनों ऐड करेंगे तो 2a आएगा क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट इंटीग्रल का वैल्यू पूछेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इंटीग्रल वैल्यू इज पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे है तो इंटीग्रल वैल्यू इज नेगेटिव। सो वो दोनों ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो दैट इज वाई ऑड फंक्शन है तो -a to a का वैल्यू 0, क्योंकि ऊपर आएंगे तो वैल्यू प्लस आएगा, नीचे आएंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगा। बट एरिया कितना है करके पूछेंगे तो a + a 2a ही आएगा, बट इंटीग्रल का वैल्यू it will become 0. That is why even function है तो it is 2 times 0 to f of x dx, odd function है तो it is 0. Even function कैसे चेक करेंगे? x के जगह -x दे देना, if you are getting the same function it is even function. x के जगह -x दे देना, if you are getting the negative of the original function it is odd function. So आपको डाउट है आप इसके अलावा इवन और ऑड के अलावा कुछ फंक्शन है क्या? है, there are functions which are neither even nor odd also. Example, x square plus x, तो आप इसका f of -x करेंगे तो आपको मिलेगा it is x square minus x मिलेगा। so it is neither, it is not equal to f of x नहीं है, it is not equal to minus of f of x भी नहीं है। f of x है तो x square plus x मिलना था, नहीं, minus of f of x है तो minus x square minus x मिलना था, वो भी नहीं है। so there are functions which are neither even nor odd also, but that is not our discussion point now. so even function, odd function, even function है तो -a to f of x का वैल्यू 2 into 0 to a हो जाएगा, odd function है तो -a to a का वैल्यू 0 हो जाएगा। अभी ये आइडिया आपको जब प्रॉब्लम करते टाइम थोड़ा और आपको समझ में आएगा। सिर्फ एक बार मैं सभी प्रॉपर्टीज एक बार बताता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी से आप वेरिएबल इंटरचेंज कर सकते हैं। इधर बोल रहे हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी अपर लिमिट लोअर लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू विल, साइन विल चेंज। a to b को a to c plus c to b लिख सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी से x के जगह a plus b minus x, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x लिख सकते हैं। इधर बोल रहे हैं कि 0 to 2a है तो 0 to a f of x plus 0 to a f of 2a minus x लिख सकते हैं।
उसमें से एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स है तो दिस विल बिकम ऑटोमेटिकली 2 इंटू 0 to a हो जाएगा. एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो इट इज 0 हो जाएगा. देन माइनस ए टू ए का वैल्यू इवन है तो 2 इंटू 0 to a हो जाएगा, odd है तो it will become 0. So these are the properties. So abhi I will do some problems using properties of definite integral in the next class.